close to 113 million adolescent girls in India, and for many it can be a challenging cultural landscape. The social stigma around young women means that teenage years can be a particularly tough time, with many dropping out of school, getting married or becoming pregnant early, and contracting diseases such as HIV/AIDS. कम्युनिटी में जो हमारे साथ होता है ज़्यादातर कि हम लोगों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, ओनली स्कूल, स्कूल से घर, और अगर स्कूल भी जाते हैं तो 12th के बाद आगे नहीं पढ़ाने दिया जाता है, क्योंकि 12th के बाद ज़्यादातर पेरेंट्स शादी कर देते हैं लड़कियों की। और कई बार प्ले जो खेलने की बात आती है तो खेलने भी नहीं देते, क्योंकि उनको पसंद नहीं कि बड़ी लड़की हो के और फिर वो खेलती हैं, कोई नहीं पसंद करता है। ज़्यादातर जो फैमिली होते कहते हैं बस स्कूल अपना पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद सीधा घर के काम करो, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह उठते अगर आप कोई बोलोगे कि आपको खेलना ही जाना है तो नहीं, घर का काम पहले करो, सबसे पहले घर का काम होना चाहिए, उसके बाद अपना कुछ अगर आपको करना है तो नेक्स्ट स्टेप होता है। The NAS Foundation Trust is a program that uses netball to educate more than 6,000 vulnerable young girls in Delhi. The foundation is backed by BT Sports charity initiative, the Supporters Club. Rajni has come through the program and is now passing on her knowledge. शुरू से अब तक लड़की के अंदर विचारों में बहुत फ़र्क है। लड़की कोई भी काम करती है अपने ऊपर डिपेंड होकर करती है, वो कर सकती है। मुझे भरोसा है कि जो लड़की काम करना चाहती है वो बगैर हिचक के कर सकती है। उसे अपने काम करने में, कहीं आने में, कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी काम उनको दिया जाता है विधिवत उसे करके लाती हैं वो। ठीक है जी। यहाँ का माहौल थोड़ा सा डाउटफुल है, तो बच्चे को बाहर भेजना हमारी संस्कृति के भी खिलाफ़ है और हम भी खिलाफ़ हैं उस चीज़ के। मगर जब बच्चे का टैलेंट देखा हमने तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो बच्ची काम कर रही है उससे हम खुश हैं। India remains a heavily male-dominated society, and it can be a dangerous place for young girls. The NAS Foundation Trust provides a sanctuary, an oasis of calm and learning. BT Sport presenters Robbie Savage and Rio Ferdinand would see for themselves the work being done. Thank you. How difficult is it for young girls growing up in India? It's very difficult. It's still a very male-dominated society we have, and areas like this where you have a lot of migratory population, generally the family sizes are big, so they have 4 to 6 siblings, and you will find that the resources are shared. So for the girls to survive and share those resources is very limited. What are we talking? Violence? So the violence, Abuse. the abuse, the domestic violence, and the sexual abuse and the physical abuse is very high. In fact, when we started the program, the sports-based program, we asked the girls, is it all right for coaches to shout at you, or is it all right for your parents to shout at you? And they said it's normal. So they have taken as part of their life. Unless a senior or their parents don't shout at them, they won't learn things. So it's that bad actually. So that has, the violence has become part of their life. The NAS Foundation Trust is about more than just sport. The girls, many from difficult backgrounds, learn about health, financial literacy and communication. For 16-year-old Arju, it's just the start of the journey.
then? एक तो कम्युनिकेशन में जैसे हम किसी से भी किसी भी तरह से हम बात कर लेते हैं और बात करने का तरीका नहीं था, वो अब तरीका बहुत अच्छे से आता है कि किस बड़े को कैसे बोलते हैं और छोटे को कैसे बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से मैं बोल पाती हूँ और फिर अच्छा भी होता है। और गुस्सा नहीं करने के लिए बताते हैं वहाँ, और मैंने अपने गुस्से पे भी बहुत कंट्रोल किया है और मैं गुस्सा भी बहुत कम करती हूँ, और भी बहुत अच्छी मतलब और सब अच्छे से मैंने बहुत सीखा है। लड़कियों को इसलिए नहीं करने देना चाहते हैं कि ये ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, 10 तरह के लोग होते हैं यहाँ, इसलिए जो है लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ बाहर जाएं, बाहर जाने के बाद कोई गलत रास्ता कर दें, कोई गलत रास्ते पे चले जाएं। इस बिना पे हमारे समाज के लोग सब डरते हैं और डरना भी चाहिए हर इंसान को। ये समाज किसी को किसके चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता है, कौन किस तरह लोग हैं, किस तरह वो लोग हैं। Just tell me, how difficult has it been to actually get the girls to come through them gates? Yeah. And to participate here? Yeah. So when you look at when you think of a country as large as India, obviously you have scope for so many sports. Yeah, you can play so many. You can play cricket. You look at hockey. You look at basketball. But at the same time, it's not easy for girls. You know, the restrictions on young women in our country are huge. Like what? Give us some examples. So simple. So for example, we are socialized that there is a particular way a girl has to be brought up. So it is not okay for a young woman to maintain eye contact with a strange man, right? And that's what girls definitely have their heads down. So our Indian culture says you should be delicate and shy and have your eyes down. So if you maintained eye contact with another man, that was not okay. So for girls, when they come to our sessions, they have not played sport before. But with each year, now we are saying that as the families accept the program, when they say that the sport is not making their girls manly, the sport is making their girls more responsible. I think it needs an initiative that I've seen so far in my short time here, is that initiatives like this are the catalyst for a change of culture for the older generation. लाइक जैसे मूवीज़ देखना, लाइक मूवीज़ देखना, तो उसमें वो पहले कहते थे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मैं आज तक कभी नहीं गई, बट जब नाज की तरफ से ऐसे गए थे तो वहाँ पे इस एग्री कि हाँ आप जा सकते हो, अब आप बड़े हो चुके हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, तो जस्ट ट्रस्ट मी एंड गो कि आप जा सकते हो। एंड जब हम यहाँ पे आए थे, 3 साल हो गए हम इस घर में आए हुए, तो यहाँ पे जो आसपास के कम्युनिटी के लोग हैं, यानी हमारी आंटियाँ, चाची, भाभी, इस तरह के, तो ये सब लोग अपने घरों में ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे कभी भी। तो किसी से बात भी करते थे थोड़ा बहुत, सब अपने घरों में, कोई भी खेलता नहीं था। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए, हमने खेलना स्टार्ट किया और लोगों को बुलाया, अब यहाँ की आंटी, चाची, भाभी, सब लोग यानी बच्चे भी सब आते हैं, एक दूसरे से खेलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। First and foremost, I think what it says to me, how much sport can influence people with, not a great background. Obviously, this morning where, kids who the main sport in India is cricket, the opportunities to be coached by good coaches, to play football on a decent surface, and have the opportunity, to exercise in an open space, and it was fantastic. And the enjoyment they had, was unbelievable. And then coming to the NAS Foundation this afternoon, playing netball with the girls, where you realise that how badly treated girls between, 12 and 20 are treated, and to see them come and, in an open space, get out of their houses, not be worried with,
abuse, with violence, you know, and to see them come here with, you would think, looking at them, they wouldn't have a care in the world. So, you know, the opportunity to play netball, you know, so what it says to me about how much sport can influence, a positive influence on young people's lives. The experiences that these kids are going through, the lack of hope, the lack of opportunity for these girls in this country just because of the culture is unreal. I mean, I didn't have any idea that this kind of situation was around, really. And in this day and age, you don't expect that. But for girls, especially just because you're a girl, to have a lack of opportunity is unreal. But this must be an unbelievable thing for them to come in here and just that chilled vibe and that learning experience, life skills with responsible people around them. It must be such a big difference from out there to in here, which is great. And this is why these type of initiatives are just like godsends, really. Through the Supporters Club, donations from BT Sport customers have helped to fund the charity featured in this programme. If you would like to support charities like the NAS Foundation, sign up to the Supporters Club simply by texting JOIN and your home number to 82010 to add £1 a month to your BT Sport bill. Standard network rates apply. You must be over 16 and have the account holder's permission. For more terms and conditions, go to thesupportersclub.org.